Yes, any doubt in the first exercise 11.1? Excuse me, sir. Yes, beta. So please mark me present, Himanshu. 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 Is this visible, beta? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, any doubt in the first exercise of phonics section, beta? 10.1, you have tried No, any sir. question? Okay. Shall I move to the next one, beta? Quick. Yes, sir. Chalo. Sir, 1 second. हाँ जी बेटा. सर इस चैप्टर की मिसलेनियस करनी होगी हमें? नहीं मिसलेनियस नहीं है बेटा. सिर्फ main exercise we will do right after that. Then revision. Only standard बेटा application हो गया. application word syllabus में लिखा नहीं है. So हमने क्योंकि clear नहीं था तो इसलिए मैंने इसको 2-3 स्कूलों में भी पूछा तो they were saying that they are not used solving this miscellaneous exercise. तो फिर हमने now the next topic I am taking beta parabola. Next conic is parabola. So if you remember beta, what will be the angle between generator and the plane which makes the parabola? Equal, right beta? When alpha and beta are equal, then we'll get parabola beta, right? So parabolic shape is what? Parabolic shape was this is the parabola beta. This is your x-axis, y dash, y, and this is parabola. This is parabolic shape beta, right? There is always a fixed point. This is known as F, the intersection point of coordinate axis and parabola is known as origin. Here in this case is origin and a fixed line. So vertex भी बोलते थे ना? Vertex भी है. अभी मैं एक एक करके एक पॉइंट पे आऊंगा. First is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line, that are equidistant from a fixed line in that are equidistant from a fixed line and a fixed point in the same plane. In the same plane. This is the definition of basically what they are saying. That this is the fixed point and this is the fixed line. Fixed line and this is fixed point. Fixed point. And suppose this is the point, इसका distance इससे and इससे distance. This distance and this distance are equidistant. किसी भी point पे लो, suppose ये point है, this distance
and this distance, this point, this distance, this distance. So set of all points in a plane, these are the set of points beta in a plane that are equidistant from a fixed line and fixed point is known as parabola. Is known as parabola. If you remember a thing, देखो आपने एक प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा साइंस में, प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल. So in that, if you Yes. kick a ball, what trajectory, what type of trajectory that gives beta? Ball वो कौन सी It's a trajectory देता है? parabolic path. पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बोलते हैं सिंपल. ठीक है, तो अगर आप किक करते हो तो बॉल पहले एक हाइट पे जाती है, उसके बाद सेम उसमें वो आती है. दैट इज नोन एज पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, राइट. तो उसी से ही रिलेटेड है ये बेटा. अब यहाँ पे जो जो पॉइंट आए दैट इज फिक्स्ड लाइन. दिस इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स. देयर इज a name for fixed line, then fixed point, that is known as focus. Excuse me, Fixed sir. point. हाँ जी बेटा बोलिए. सर डेफिनेशन से सर डायग्राम से रिलेट नहीं हो पाया, मतलब समझ नहीं आया. अभी आ रहा हूँ बेटा, अभी मैं डिराइव करूंगा व्हाट इज दिस. देखो ये सेट ऑफ, और जैसे हमने सर्कल में पढ़ा था बेटा, सर्कल में क्या था बेटा? सेट ऑफ पॉइंट विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यही था ना बेटा? यस सर. सेट ऑफ ऑल पॉइंट एंड देन इन डिस्टेंसों को हम आर बोलते हैं एंड दीज आर आर्बिट्री पॉइंट, और वी कैन से दैट देयर आर मेनी पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. आप इन पॉइंटों की डिस्टेंस मेजर करो, इक्वल आता है, इट मींस द शेप इज सर्कुलर. नाउ हियर एक फिक्स पॉइंट और एक लाइन है कहीं पे, उस फिक्स लाइन और इस फिक्स पॉइंट से प्लेन में ऐसे पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं जिनका डिस्टेंस सेम आ रहा है. तो ऐसे पॉइंट के सेट्स जो बनेगा, उससे जो डायग्राम बनेगा ज्वाइन करके, दैट इज नोन एज पैराबोला. ये मैं कह रहा हूं. रैंडमली अगर मैं पॉइंट लेता हूं एक ये, दिस इज ए फिक्स लाइन एंड दिस इज ए फिक्स पॉइंट, दिस इज ए फिक्स लाइन. सो आई हैव टू टेक पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from fixed point. This is a fixed point and fixed line. This line, this distance and this distance are equal. If we take this point, this distance and this distance is equal. If we take this point, distance from the fixed line and this is same. We are saying this is the definition of parabola. जब मैं ऐसे set of points को collect कर लूंगा which are equidistant from the fixed line and a fixed point, the shape by joining all those set of points is known as parabola. ठीक है. और पैराबोला की इक्वेशन क्या आएगी? जैसे हमने सर्कल की इक्वेशन निकाली थी x माइनस एच का स्क्वायर, तो पैराबोला की इक्वेशन पे भी अभी हम आ रहे हैं. ठीक है, तो अभी मैं बेसिक पॉइंट बता रहा हूं. व्हाट इज फिक्स लाइन इज नोन एज, व्हाट इज फिक्स पॉइंट इज नोन एज, राइट. Then one thing is axis of parabola. Axis of parabola is what beta? A line passes through the focus, through the focus and perpendicular to the directrix. A line which passes through the focus and perpendicular to the directrix is known as axis of parabola. तो अब इस सिचुएशन में बताओ एक्सिस ऑफ पैराबोला में किसको मेंशन कर रहा हूं? ये डायग्राम में बेटा आपके पास एक्स एक्सिस, x axis, right? In this situation, for this diagram, this is x axis, right? अब हम by definition, अब एक definition के through will reach to the equation of parabola by using definition. Please show the previous page. Okay बेटा, okay.
Thank you, sir. बेटा see, I'm again making a diagram. Sir, please map to present Lenoir. Lenoir, 1 second. X dash y dash, and suppose we are taking this parabola. This is a coordinate plane. Suppose this distance is a, so I'm taking coordinate of this AF is fixed point is a0, and making a line parallel to y-axis on negative x-axis, right? Same, I'm taking this line x equal to minus a. This is a fixed line which is known as directrix. This is a fixed point which is known as focus. Now I'm taking a point, random arbitrary point, which is known as x comma y, and as per the definition, a set of points which are equidistant from a fixed point and a fixed line. This point is known as what? Can anybody says that? What is this point beta? Suppose PF इसको B बोल देते हैं या A बोल देते हैं. What are the coordinate of A point beta? Any point on this line parallel to y axis. बोलो बेटा. Who is this beta? Lenoir present, right? Yes, sir. Okay. Now, what are the coordinate of this point beta? See, this Minus line a I'm comma taking. y. Very good. Minus a comma. दोबारा बोलो क्या लिया आपने? Minus a comma y. माइनस ए कॉमा वाई क्यों लिया ये बताओ पहले. सर जो P पॉइंट है x comma y सर वहां से तो वो डिस्टेंस सेम ही है. क्योंकि ये पैरेलल टू, यस बिल्कुल, तो ये डिस्टेंस सेम है आपने. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू definition of parabola, what that says, set of all points which are equidistant from a fixed point and from a fixed line. So we can say that PA is equal to PF. To use distance formula to find out PA is x minus plus हो जाएगा x plus a whole square, y minus y whole square is equal to now PF root x minus a whole square plus y minus 0 whole square. Simplify this. Square root, squaring both sides cancelled. Now we have x plus a whole square is equal to, this is 0 square beta, x minus a whole square, y minus 0 is y, this is y square. Now simplify this. X square plus a square plus 2ax equal to x square plus a square minus 2ax plus y square. X square cancel, a square cancel. Shift this 2x to this side. It is 4ax equal to y square. So finally, y square equal to 4ax is the standard equation of the parabola. Standard equation of the parabola. This is standard equation of the parabola, right? Using definition beta. Clear beta, bolo? Is this clear? Yes sir. Aryan, is this clear beta? Yes, sir. बेटा प्लीज रिप्लाई. भव्या, एनी डाउट? देखो सिर्फ डेरिवेशन, ऐसे डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगेन आई एम सेइंग दैट बिकॉज यू पीपल आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, you have taken science, so you must know all these things also, right? The concepts is always help you to solve some sort of the HOTS better.
कुछ अच्छे y क्वेश्चन will को take the सॉल्व। coordinates of point A as minus A on y. बेटा देखो इस कोऑर्डिनेट पे जितने भी इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है दैट इज नोन एज वाई। मुझे तो ये डिस्टेंस पता है ना एक्स, दैट इज माइनस ए। तो आप यहाँ ले लो, स्टिल इट इज ए वाई। यहाँ ले लो ए वाई, दिस इज ऑल्सो ए वाई। And now you can just change that. If you are taking in the negative direction of y, you can write minus a comma minus y. I'm assuming this line is y, this distance is y, so all distance is y on this beta. Y axis को indicate कर रहा है ना ये बेटा। भाई जनरल पॉइंट हुआ ना। अब जैसे ये डिस्टेंस ओरिजिन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, दिस इज द डिस्टेंस इज माइनस ए। तो x कोऑर्डिनेट वी नो दैट माइनस ए, बट x equal to minus is a line which is parallel to y axis. तो हमने लाइन खींच दिया। Now any point on this line and the y coordinate of this line is always y बेटा। ठीक है, x equal to minus a का जो भी आपका उस लाइन पे जो भी y का कोऑर्डिनेट होगा that is always y. If we are writing in the positive direction of y, we are writing positive y. If we write in the negative direction of y, we write minus a comma minus y. This is the difference. ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। y चल रहा है, लेंथ है वैसे राइट नाउ दिस इज इंडिकेटिंग ओनली लेंथ, तो हम y लेके चल रहे हैं। ठीक है, नाउ वी हैव सब 4। हाँ जी बेटा। सब पैराबोला हमेशा जो ओरिजिन से पास करना चाहिए। नहीं लिया हमने बेटा, ये लिया। स्टैंडर्ड पैराबोला इज दैट विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। स्टैंडर्ड पैराबोला इज दैट विच पासेस थ्रू द ओरिजिन ओनली। शिफ्ट हो सकता है, इसका ओरिजिन शिफ्ट हो सकता है, इधर शिफ्ट कर दो। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन it means this is the application of parabola started beta. The application of parabola is not in CBSE syllabus beta, that is in your JEE syllabus beta, right? पैराबोला की एक बार डेफिनेशन बताओगे? Parabola की definition थी बेटी, set of all points in a plane, set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point. These all distances are equal. जिस जगह पे डिस्टेंसेस सारी इक्वल हो जाएंगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस लाइन का और इस फोकस का डिस्टेंसेस इक्वल हो जाएगा, वो जो शेप बन के आएगी दैट इज ऑलवेज पैराबोल। ठीक है, मैं जो सेट ऑफ पॉइंट ऐसे नहीं ले रहा बेटा। जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसमें तो जो लाइन से डिस्टेंस है वो ज्यादा है। नहीं नहीं बेटा, आप समझे नहीं। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये डिस्टेंस सेम आएगी, नो। वो आई एम इमेज की सेइंग इक्विडिस्टेंट। देखो द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point. तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन एंड फ्रॉम दिस पॉइंट इज इक्वल। अगेन नेक्स्ट पॉइंट हमें ऐसे लेना है जिससे कि इस लाइन से डिस्टेंस और ये, तो आप सोचो कि इसके बाद ये वाला पॉइंट ऐसा होगा, इसके नीचे जिसकी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, तो नहीं होगा। देखो अगर मैं इसी के नीचे ये वाला पॉइंट लेता हूं तो इससे इसकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो सेम हो गई बट ये डिस्टेंस चेंज हो गई बेटा, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। थोड़ा सा स्लाइटली कर्व की फॉर्म में वी हैव टू टेक अनदर पॉइंट so that the distance from a fixed point and a fixed line is always equal. तो मुझे इसको मैच करना है बेटा, इस लाइन को। ओके सर। ठीक है, चलिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा, one more point is in this the topic, or we can say that a concept, that is latus rectum of parabola. Latus rectum of parabola. Latus rectum of parabola is what beta? A line segment. देखो, a line segment that passes through, एक second, 1 second. Now, a line segment passes through the focus, or you can say the fixed point, focus
and perpendicular to the axis of parabola. Axis of parabola is this x-axis. Perpendicular है देखो, this is a line segment. Line segment passes through the focus and perpendicular. This line is perpendicular to the axis of the parabola and whose end points lie on parabola. End points of this line segment lies on parabola. This is known as latus rectum. This is the name of this line which is passes through the focus and perpendicular to the axis of the parabola, whose end points lie on the parabola, is known as latus rectum. तो इस लाइन का नाम इन्होंने latus rectum बोला बेटा. इस लाइन का नाम इन्होंने latus rectum बोला. Right बेटा? The name of this line is what? Latus rectum. Now, to find out the length of the latus rectum. Now we need to find out the length of the latus rectum. See, next concept is length of the latus rectum. For understanding this better, please see page number 245. Please come to see page number 245. Please see this explanation of how to get the length of the latus rectum. Please see better. Please see and tell me whether you are able to understand this or not. Yes, sir. Clear हो गया बेटा? This is the fixed line. This is the fixed point. और इसको ऊपर कर दो F, and this is coordinate of this is A0, and this is at a distance of A unit. This is suppose a point P, and we have assumed this point as A. This is F. So थोड़ा सा अलग हो गया, पॉइंट यहां ले लो इसको. Now see beta, by the definition of the parabola, AF equal to AC. ये क्या आ गया AF? अच्छा अच्छा ठीक है, इन्होंने इसको बोला बेटा PF जिसे मैंने बोला है और PA. So PA is equal to PF. This is by definition of the parabola beta. Distance from a fixed point, fixed line and fixed point is equal. So PA is equal to PF और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, सपोज करो B. So this is also clear that PA is equal to what beta? बोलो. This implies if PA is equal to PF in this situation, this is a point which is equal to PA equal to FB. And what is this distance beta? From the origin, this distance is A and this distance is also A. So this is equal to 2A. Now what concept they are applying now? बोलो बेटा. बोलो बेटा. देखो ज्योमेट्री आपके सामने ही है. P और इसको मान लेते हैं this is Q. So this PQ line is known as length of latus rectum. So using this concept beta, we can say that QF is equal to PF. बोल सकते नहीं बोल सकते बताओ बेटा. QF and PF both Yes, are sir. equal. And Yes, sir. now this is what? This length is what beta?
दिस इज 4a 2a। तो अगर मैं पी क्यू निकालता हूं, दिस इंप्लाइज पी क्यू इक्वल टू पी एफ प्लस एफ क्यू विच इज 2a प्लस 2a 4a। सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वी हैव 4a। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ देखो बेटा, मैंने अभी आपको वी हैव आई हैव गिवन यू ओनली वन टाइप ऑफ पैराबोला बेटा। अभी आपको मैंने only this parabola, all I've given all the data related to this parabola. ठीक है, this is x dash y dash, right? So in this equation of parabola is y square equal to 4ax, and this is known as right handed parabola. right handed मतलब right side open parabola, right side open parabola, right? This is the first type of parabola. Second parabola is अपोजिट साइड बेटा। अगर ये साइड है तो इसकी जो साइड देखो, यहाँ पे था हमारा x इक्वल टू माइनस है, ये डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन, दिस इज a कॉमा 0। नाउ दिस इज अपोजिट नाउ दिस टाइम। so what are the coordinate of this f beta now? minus a -a, 0 minus and a. what is the equation of this beta now? x equal to, right beta, and same this is y dash y x and x dash. Equation of this is y square equal to minus 4ax. If we simplify by definition, we same set of all points which are equidistant from fixed line and a fixed point. Simplify करोगे, you will get y square equal to minus 4ax. And this is known as left-handed parabola. इसका मतलब है left side open parabola. सर Now third, हाँ जी बेटा, सर अगर ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला अगर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होता तब भी इसकी इक्वेशन यही होती। आप ऐसे मतलब बोल रहे सर मतलब ऐसे? सर लाइक अभी ये पैराबोला सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अगर ये फर्स्ट Second and क्वाड्रेंट में third. ऐसे पैराबोला होता, मतलब लेफ्ट हैंडेड अगर फर्स्ट और फोर्थ में होता तब भी ये इक्वेशन होती। नहीं नहीं नहीं, मैं समझा, आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे करके पैराबोला की शेप ऐसे बोल रहे हो, नो सर ये बोल रहे हो, फिर ऐसे बोल रहे हो, नो सर फिर और क्या आप कह रहे हो ना, सेकंड और थर्ड में और कैसे रहेगा? राइट हैंडेड सेकंड हैंड में मतलब थर्ड में सर कैसे होता है? अब जैसे अच्छा सर ये अच्छा, लेफ्ट हैंडेड ऐसे पैराबोला मतलब ऐसे सेकंड और करके थर्ड। यस सर, इसकी भाई इक्वेशन क्या होगी? बेटा ये तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो गया ना, आपको ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा। देखो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वी हैव नॉट डन इन स्ट्रेट लाइन आल्सो। आपको मालूम होगा स्ट्रेट लाइन में भी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है वहां पे। जैसे अगर मेरा ओरिजिन ये 0 0 है और अब मुझे ओरिजिन यहाँ शिफ्ट करना है इस जगह पे, तो कितनी डिस्टेंस पे शिफ्ट कर रहे हो आप एक्स और वाई को? खाली यही नहीं होता, देखो ये है, अब मैंने ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट कर दिया, दिस इज नाउ माय न्यू ओरिजिन। तो इसको शिफ्ट कैसे कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे कितना चेंज किया, वाई एक्सिस पे कितना चेंज किया, तो इसकी इक्वेशन डिफरेंट होगी बेटा। हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोला विच पासेस थ्रू दी ओरिजिन, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं बेटा। हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है। अगर आपको ये समझना है तो थोड़ा सा ओके सर। रुको, मैं जब आपको सिलेबस ये कंप्लीट कर देता हूँ उसके बाद आपको शिफ्टिंग ऑफ ये पैराबोला वगैरह के कॉन्सेप्ट को हम ले सकते हैं, बट दैट इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सीबीएसई बेटा। हमारे सीबीएसई में 12th में भी सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोला यूज होंगे बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। जो शिफ्टिंग वाला आप आ रहे हो एप्लीकेशन पे बेसिकली, तो वो एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में ही नहीं है बेटा, बेकार में, उसमें यस टाइम भी अभी ज्यादा लगेगा। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो लो फिर आप कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम पैराबोला की इक्वेशन ओरिजिन शिफ्ट करके कैसे निकालते हैं। ठीक है, डेफिनेशन वही रहेगी जो मैंने अभी आपकी बोली है पैराबोला। ठीक है, चलो अब यस थर्ड सर। देखते हैं। नाउ थर्ड पैराबोला इज, दिस इज नोन एज अपवर्ड पैराबोला, अप साइड, एंड इसकी फिक्स लाइन ये हो गया, फिक्स पॉइंट ये हो गया, द कोऑर्डिनेट ऑफ फिक्स पॉइंट इज 0, a, and the line of its fixed line is y equal to minus a, and equation of this is x square equal to minus 4ay.
And the last, this is known as upward parabola. You have to remember these names so that when we will solve questions in 12, you can directly recognize this is the upward parabola. Now the fourth one is downward parabola. Fixed line is this. Equation of this fixed line is y equal to a, and the fixed point is 0 comma minus a. And equation of, sorry, this is plus 4ay and x square equal to minus 4ay. And this is known as downward parabola. Downward parabola. Right? So we have 4 type of parabolas बेटा. ठीक है? अब मैं इसके कुछ important point आपको बता रहा हूँ which you have to remember for solving the question. Right? So we have, हाँ जी बेटा. Intersection of parabola and the axis is known as what? Either you can say origin, or another name we have learned, it is vertex. Remember this thing. Vertex and origin are same in standard parabola. Remember this thing. Vertex will be changed if we shift origin beta. मतलब shifting और application में vertex change हो जाएगा. But now in this situation, in all the 4 parabolas, vertex is at origin. हम यहाँ बोलेंगे vertex is at origin always. ठीक है? Shall we move beta? Yes, sir. Okay. Now the important thing, you have to remember this. I'm turning this like this way. So partition see, first parabola I've given you this one whose vertex at origin, and this is the fixed line. This is y-axis, x-axis. This is v, fixed point, a comma 0, and this is x equal to a. And equation of this parabola is y square equal to 4ax. Right? And name of this is right-handed parabola. Next is second here line equal to x a, and the coordinate of focus is minus a comma 0, minus a comma 0. This is y-axis, x-axis. Equation in this form is minus 4ax, and this is known as left-handed parabola. Now third one is y equal to minus a. This is y-axis, x-axis. Again, this is your vertex and fixed point 0 comma a. Equation of this parabola is x square equal to 4ay, and this is known as upward parabola. And the last one is downward parabola. Fixed line, equation is y equal to a, fixed point is 0 minus a. This is x-axis and this is y-axis.
and this equation is x square equal to minus 4ay, and this is known as downward parabola. ठीक है बेटा? Now, what are the points you have to remember? First thing, for all these parabola, what are the coordinate of its vertex? Vertex is at origin and coordinate of vertex is 0, 0 in each and every case. Now, next point is coordinate of focus. In each category, it is in this is a comma 0. In this, it is minus a comma 0. For third one, it is 0 comma a, and fourth one, it is 0 comma minus a. F indicate focus beta. Next is axis. Axis of this parabola is x-axis. In this also x-axis. And in this, it is y-axis. This is y-axis. Equation of axis. Axis here beta, x-axis, x-axis, y-axis, y-axis. So what is the equation of x-axis? What is the equation of x-axis beta? Y equal to 0, y equal to 0, x equal to 0, x equal to X is equal to 0. right? Okay. Now the next point is सर ये next इक्वेशन ऑफ point. एक्सिस कैसे आई? बेटा ये मैंने बोला था ना, एक्सिस का मतलब क्या होता है? A line passes through the focus. बोला था ना बेटा, देखो एक्सिस की डेफिनेशन क्या बोली थी मैंने आपको? स्टार्टिंग में ही बोली थी, देखो यस सर, क्लियर. आगे देखो, एक्सिस ऑफ पैराबोला, a line passes through the focus and perpendicular to the directrix of x axis. देखो डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन एंड ये पैराबोला जो फोकस से पास होकर जो लाइन जा रही है. पर डाउनवर्ड वाले में y की वैल्यू क्या है? वाई एक्सिस बेटा, डाउनवर्ड वाले में y की वैल्यू, दिस इज y एक्सिस बेटा. सर कहाँ आज पूछ रहे हो? सर डाउनवर्ड वाला पार्ट पूरा दिख नहीं रहा. ओके, y इक्वल दिस इज 0 कॉमा माइनस a एंड दिस इज y इक्वल टू a बेटा, राइट? ओके सर. ठीक है, अभी मैं इसको आपको सबको जब ये भेजूंगा ना इसकी फोटोज, तो आप जरूर नोट कर लेना फॉर फ्यूचर पर्पस बेटा, ये टेबल. नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बेटा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. So length of latus rectum, in each case it is always 4a, length of latus rectum. Then आएगा directrix. Directrix. In this situation, equation of directrix is x equal to minus a. That is x plus a equal to 0. In this it is x equal to a. That is x minus a equal to 0. In this it is y equal to minus a, and that is y plus a equal to 0. In this category it is y equal to a, and that is y minus a equal to 0. Right? So equation of directrix is this one. Latest rectum we have done. So एक बार हमें clear हो जाएगा question से what they are asking. Coordinate of the focus, axis of the equation, directrix, latest rectum of the parabola. So these points they will ask you. One more thing जो आपके जेई में थोड़ा सा सिंपल सी चीजें इसलिए बता देता हूँ. सिमेट्री. सिमेट्री, तो सिमेट्री कैसे चेक करते हैं? इफ इन एनी कर्व, if the power of x is even, it means it is symmetrical about y axis. If the power of y is even, it means it is symmetrical about x axis, right? So in this case, in this equation of parabola beta, we have y raised to the power 2, which is even. So इसकी symmetry हो गई x axis. This is basically x axis के symmetrical है, यानी x axis के upside and downside making a same shape beta. This is the meaning of symmetry. Again this is x axis, and again this is y axis in this case, and this is y axis. अब जैसे सर्कल है, सर्कल में x square plus y square equal to a square suppose. So in this we have both x and y, both have even power. तो आप देखोगे सर्कल is symmetrical about both axes, x axis और y axis
दोनों पे एक जैसी शेप बनाता है बेटा। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर बेटा, दिस टेबल यू हैव टू रिमेंबर, राइट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट देख लो आप। अभी इन्हीं पॉइंट्स पे टेबल, सर एक बार टेबल दिखा दो। 1 सेकेंड बेटा। 11.2 exercise question number 1 I am taking. Exercise 11.2 question number 1. Question: in each of the following exercise 1 to 6, find the coordinate of the focus, axis, parabola, and the equation of directrix and the length of the lattice rectum. 5 things they are asking. So first part, in this first question is 12x. Now compare it with, this is matching with which type of equation or which type of parabola beta? बताओ बेटा, इसकी इक्वेशन देख के बताओ। दिस इज मैचिंग विद दिस वन बेटा। देखो सर राइट हैंडेड y पैराबोला। स्क्वायर राइट हैंडेड पैराबोला, देखो y स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव x, राइट। तो दिस इज अ राइट हैंडेड पैराबोला। तो कंपेयर इट विद, तो दिस विल इंप्लाई 4a इक्वल टू 12 and from here a equal to 3. Now one by one, first thing they are asking coordinate of focus. So in this situation I've given you all the data beta। देखो in this situation we are on this parabola beta, so focus coordinate is a comma 0, so right focus coordinate of focus is a comma 0, so for this answer focus is 3 comma 0. Next they are asking axis of the parabola, next is axis। इस टाइप की एक्सिस कौन सी होती है बताओ बेटा, व्हाट इज द एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला? x axis, that is I can write y equal to 0. Either you write y equal to 0 or write x axis beta, because x axis is the axis and equation of this axis is y equal to 0. Next they are सर asking, इक्वेशन पूछी होगी तब y इक्वल्स टू 0 लिखेंगे और जब एक्सिस पूछी होगी तब x एक्सिस। मतलब दोनों चीज, हाँ आप एक्सिस पूछ रहे हो तो राइट एक्स एक्सिस ओनली, और अगर आप भूल जाते हो कि एक्स एक्सिस ना लिखते हो तो आप y इक्वल टू 0 लिख दोगे, तो इसका मतलब भी अंडरस्टूड है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स एक्सिस ओनली। यस हुआ क्लियर बेटा? बोलो। नाउ नेक्स्ट दे आर आस्किंग इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो आप पहचानो इस टाइप की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है बेटा? x इक्वल टू x इज इक्वल्स टू -3 -3 is equal to 0. तो x इक्वल टू -3 X और minus यू 3 कैन राइट x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो इस वाले केस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स थी बेटा x इक्वल टू -a, a shifted to this side become x plus a equal to 0, so you write either ये answer or this answer बेटा, in any answer you can write, so this is the answer, in this case this is the answer, first part is of lattice rectum, in this it is 4a and value of a is 3, so 4 into 3 is 12, these are the answers बेटा। So 1 to 6 you have to solve all these questions। एक और ले लेते हैं, देखो नेगेटिव वाला कोई, सपोज आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6, this is x square equal to -9y, so we have to compare it with x square equal to -4ay। now compare the coefficient of y both side, -4a equal to -9, this implies a equal to 9 by 4 and this implies a is equal to 9 by 4, only a is equal to 9 by 4 beta। now focus for this category beta, x square equal to -4ay, ये रहा बेटा x square equal to -4ay, focus in this category is f coordinate 0 comma -a, so we write f 0 comma -a, answer is f 0 comma -9 by 4। next they are asking axis, so axis is y axis, इसकी इक्वेशन हो गई बेटा x equal to 0। next they are asking equation of directrix, in this equation is y equal to a, this implies y equal to 9 by 4 and this implies y minus 9 by 4 equal to 0, and simplify this, this is 4y minus 9 equal to 0, this is the equation of directrix। now length of, हाँ बेटा बोलो।
Yes, sir. Sorry, क्या बोलो? So physics classes started. 1 second बेटा. 12:45 तक बेटा. 1 second ये खत्म कर लेता हूँ बेटा. 1 second. This is 4a. So 4 into a value is 9/4. So my answer is 9 in this case. So please try 11.2 exercise yourself now on the basis of this table beta. Right? This is Okay, the sir. only work I'm giving today. Right? 1 second beta. Don't leave. 1 second. Just 1 second. Many students have already left. Okay beta. Now you may leave. Right. You may leave it. Okay, sir. Okay. Okay.